Hi everyone, welcome back to Be Right Back. So a few days back we had shared a video of our top 5 picks of great places to stay in Delhi and maximum 2 hours distance from Delhi. And after that video we've got a lot of new recommendations of great places that should be part of such list. तो उनमें से हमने फिर further 5 अच्छी properties pick करे हैं for various reasons and created this particular list that we are about to share. और लाइक लास्ट टाइम हमने इसमें भी हर होटल के साथ में 1 से 2 पॉइंट्स ऐसे रखे हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में व्हाट इज दैट मेक्स दैट पर्टिकुलर होटल स्पेशल एंड व्हाई इज दैट यू शुड कंसिडर विजिटिंग और स्टेइंग एट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So I think it's a great one to start with, and that property is ANDAZ Aerocity. वैसे तो एरोसिटी में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल ऑफ देम आर रेनाउंड, रेप्यूटेड, ग्रेट, पीपल गिव ग्रेट रिव्यूज़. सो वहाँ पे आप कहीं पे भी रुक सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर ग्रेट प्लेसेस टू स्टे. बट अमंगस्ट ऑल ऑफ देम ये बात हमें माननी पड़ेगी कि अंदाज एज अ प्रॉपर्टी रियली स्टैंड्स आउट और उसके बहुत सारे रीजंस हैं. वन ऑफ देम विच इज़ अ पॉपुलर रीज़न इज़ the kind of casual environment and the cool, composed, relaxed environment Andaz creates that you feel कि हाँ मैं एक business corporate hotel में नहीं आया हूँ. Even though Andaz is also a business hotel, but the kind of environment they create is more relaxed, and that you can see even from the uniforms of the staff that it's very different and very relaxed versus other properties that have a very serious एंड अ टिपिकल होटल यूनिफॉर्म. तो अंदाज का एक अपना अंदाज है उस मामले में. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद आपको पता हो शायद ना पता हो इज़ दैट all the rooms are designed keeping one element of Delhi in mind. So what they've done is they've picked up 401 reasons to fall in love with Delhi, and each reason from these 401 reasons has been picked for each room, and then that room signifies that particular reason, and that could be anything. For example, Qutub Minar, just for an example. So they would pick up design elements from Qutub Minar, use it as an interior design element in one of the rooms. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. और अगर कोई भी इंक्विजिटिव है एज अ गेस्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज 401 रीजंस जिनके बेसिस पे उन्होंने हर रूम को डिज़ाइन करा है, द स्टाफ इज़ हैप्पी टू टेक यू ऑन अ टूर एंड एक्सप्लेन यू अबाउट ऑल ऑफ देम. Our next one on the list is Lemon Tree TARUDHAN. ये वैसे तो प्रॉपर्टी ज़्यादा पॉपुलर है गोल्फ एंथुसियास्ट के लिए because anyone who loves golf knows about this property and it is generally their Sunday getaway. But even if you don't, I think it's a great option to consider for a great family getaway because apart from golf they have a lot of other activities for families, for kids, everyone. एंड एक गोल्फ कोर्स के पास में रहना या गोल्फ कोर्स के आसपास में रहना ही अपने आप में एक बड़ा स्पेशल एनवायरनमेंट होता है बिकॉज हम लोग एक मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं एंड दीज आर ऑल क्राउडेड प्लेसेस मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. सो व्हेन यू लिव बाय दीज वास्ट लॉन्स, वास्ट ग्रीनरी, आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ नाइस visual change for our eyes, which is great. So Lemon Tree Tarudhan is a beautiful place, and it's actually economical when you look at the amenities that it has and the other properties in the list. So it is economical compared to them. So I would say if you're looking for a value for money getaway from Delhi NCR where every penny that you're paying has a value attached to it, Lemon Tree Tarudhan Valley is one of them, and it should be on your list. हेरिटेज मानेसर एक परफेक्ट फैमिली गेटअवे प्रॉपर्टी है एंड बिकॉज हम 2 घंटे की डिस्टेंस की बात करें तो हम जयपुर तक नहीं जा सकते, बट ऑल ऑफ दैट फील ऑफ राजस्थान कैन बी अचीव्ड एट दिस प्रॉपर्टी वेरी क्लोज टू डेली. सो द आर्किटेक्चर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम राजपूतानी कल्चर and is mixed really well with modern requirements and amenities that a hotel should have. So I think it's a great combination and great work done by their creative and design and architecture team. So Heritage Manesar, if you have not been so far, add it to your list. The Gateway Resort DAMDAMA. So earlier it was under Taj and it was called the Taj Gateway Resort. But now it is just called the Gateway Resort DAMDAMA. मैं भी actually Taj वाले time पर ही रुका था. But recently when I was searching about it, I realized that Taj is not part of this property anymore. But still, the property is still the same. It looks exactly the same. And it has villa-style homes which are spread on 2 floors. And the property is really massive.
So I would suggest that if you go closer to monsoons, then you would also be able to visit the DAMDAMA lake, because at that time DAMDAMA lake would be full, so it would be open for water sports, boating, etc. So I think it just adds more value to it, to your trip, because when you're going away, so it's not just the hotel that you're experiencing, but at the same time, because it's very adjacent to the DAMDAMA lake, you'd be able to experience that as well. सो मेजॉरिटी जो प्रॉपर्टीज़ की हमने नाम लिए हैं वो ज़्यादातर मानेसर, सोना और NH8 पर ही हो गए हैं. सो दिस पर्टिकुलर वन एंड द लास्ट वन ऑन दिस लिस्ट इज़ नूर महल, विच इज़ इन करनाल. And it's a beautiful luxury hotel which has a great mix of Rajputani and Mughal architecture, and you should definitely consider visiting it once, even during your road trip towards Chandigarh. Make it a visit and have a look how the property is, because of the number of rooms it has, because of the vast halls it has, and the environment that they are able to create for events. So Noor Mahal should be on your list if you're considering any family event or considering getting married. हमारी तो हो गई, आप देख लो. ओके, सो फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा सा दूर जाएंगे दिल्ली से. ये अभी तक की लिस्ट हो गई हैं 2 घंटे के डिस्टेंस में. नाउ वी आर लुकिंग एट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ 5 to 6 hours फ्रॉम दिल्ली, विच आई फील इज़ अ परफेक्ट ड्राइवेबल डिस्टेंस. एंड अगर आपके पास कोई होटल ऑप्शंस हैं और सम प्लेस यू स्टेड विद इन 5 to 6 hours ड्राइव ऑफ दिल्ली that you think we should consider, please share it with us in the comment. And until our next video, be right back. ऐसे कटता नहीं है, पहले फिर हम हाथ बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद बंद करते हैं. ऐसे वीडियो एंड होती है. ऐसे नहीं होती कि बस ऐसे करा और बंद हो गई. ऐसे बंद होती नहीं है, वो सिर्फ इफेक्ट है. चलो, बी राइट बैक.